Hey all, it's me, Unpopular Didi. It's my birthday. So today I turned 22. Was I supposed to say it out loud? No. So this video is going to be a chit chat, come outfits, come vlog. So without any further ado, let's begin. See, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि क्यों लड़कियां अपनी उम्र बताने में इतना शर्माती है. मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है. बट वील कम टू दैट. बट उससे पहले मुझे रेडी होना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है. मुझे अभी बाहर जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ टू पार्टी. स्टार्टिंग आई विल बी अप्लाइंग दिस कर्लिंग क्रीम अपने बालों में ताकि बहुत डिफाइंड लगे मेरे बाल. इससे बाल जैसे ही मैं इसको निकालूंगी ना, थोड़े कर्ली, थोड़े डेफिनेशन मिलेगा मेरे बालों को. तो जब भी मेरा बर्थडे पास आ रहा होता है ना, मुझे बहुत अंदर से एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग आती है. अभी जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, आई एम रियलाइजिंग, am I doing enough to be called a 22-year-old woman? When I was 20, this thought stuck my head कि भाई आसपास के लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ उखाड़ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? Am I doing anything? Like, what have I accomplished in my life? तो वो थॉट मुझे बहुत परेशान करता है जब भी मेरा बर्थडे आता है. एंड एवरी बर्थडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है अपने बारे में. इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग अबाउट मी, आई नीड टू करेक्ट इट. इफ आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई नीड टू डू समथिंग. सो लास्ट ईयर आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग द यूट्यूब मनी. सो क्या होता था, पहले पहले जब यूट्यूब से पैसे आते थे, आई यूज टू स्पेंड इट एक होता है ना कि जब एक इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो फिर वो आगे पीछे का नहीं सोचता, वो बस खर्चा करने लगता है. अरे पैसे तो हैं अकाउंट में, जस्ट स्पेंड इट, ये खरीद लो, वो खरीद लो. सो आई वांटेड टू चेंज दैट. ठीक है, सेविंग मेंटालिटी इज गुड, बट यू नो व्हाट्स बेटर? इन्वेस्टिंग. आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट येस, आई एम इन्वेस्टिंग द मनी दैट आई एम गेटिंग, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्टेप. तो तुम्हें थोड़ा टेक्निकली सोचना चाहिए एंड खुद को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए. And last year, I promised myself one more thing. The thing is that my mom is very good to people. You tend to behave like your parents at times. ठीक है, तो I used to be a people pleaser. Like, I wanted to make everyone happy around me. So since my mom used to help everyone out, I had that mentality कि मुझे भी लोगों की help करनी चाहिए, and खुद को sacrifice करके I need to help other people. Like, I did not know how to say no. मुझे no बोलना नहीं आता था. अगर किसी को मुझसे कुछ काम होता था, I used to say yes all the time. फिर I promised myself that this year I'm going to put myself first. And अगर मुझसे कोई खुश नहीं है, I don't care. Last year I also learned one lesson that it's okay if people misunderstand you. ठीक है? Everyone does not deserve your explanation. And the moment I realized that कि मुझे खुद को प्रायोरिटी देना है, and जिस दिन I stopped caring so much about what people think about me, life became a lot more better. उससे पहले क्या होता था कि अगर कोई मुझसे नाराज हो जाता था ना, I used to take it to my heart. I used to think कि मुझसे नाराज क्यों है? Did I do something wrong? Did I do something crazy? मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत किया होगा तभी ये इंसान ऐसे है. मैं हमेशा ब्लेम्स अपने ऊपर ले लेती थी कि भाई जो भी हुआ है ना, मेरी वजह से ही हुआ है. आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. द मोमेंट आई स्टॉप्ड गिविंग एनी, people came back to me. Like those people who used to hate me and not talk to me and make weird faces when I entered into the room, they started talking to me. So it's okay. Like if people misunderstand you, let them be. So I can say that last year मैंने बहुत कुछ सीखा. मतलब मैंने लोगों को no बोलना सीखा. If I cannot do it, I would simply say no, I cannot do it. When you start saying no to people, जब तुम्हें समझ में आता है कि तुम नहीं कर सकते हो and you don't want to do it, जब तुम वो no बोलना सीखते हो, तुम अपने mental health को सुधार रहे हो. तुम अपने आप को first priority दे रहे हो, which is the best thing you can do to yourself. This will only help you to grow, to make right decisions. And the last thing that I wanted to learn last year was being grateful. Being grateful for the people who have always been there for you. कभी कभी हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारे पास है तो क्या होगा.
but being grateful is one of the biggest virtues that you can have. Like I'm grateful that I'm 22. I'm grateful that I woke up today, and I'm grateful that मैं healthy हूँ and I'm good. Like I'm good. There are a lot of people जो सो जाते हैं and then सुबह उठ नहीं पाते हैं. I'm glad that I was able to see the morning today. And I want you to know that जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कभी ना कभी ऐसा लगता होगा, मेरी वीडियो देख के ही तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये लड़की इतना सब कुछ कर रही है एंड ये कह रही है कि ये कुछ नहीं कर रही है. लेट मी टेल यू दिस, तुम्हें ये सोच के कभी नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग अपना लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हैं एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन ट्रैक. कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड कुछ लोग थोड़ा लेट सक्सेसफुल होते हैं. So that's fine. Even though we feel bad when we look at people, but you do remember कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुमने खुद को कहाँ से कहाँ तक पुश किया है. I want you to understand that as well कि सबका जर्नी अलग है. Everybody's journey is different. तो तुम अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो. You can compare your own standards. For me, I do that. कि मैंने कितना अचीव किया, मैं और अचीव कर सकती थी बट मैंने नहीं किया. I can do that. But I would never compare myself to anyone else. So I think सबका ट्रैक अलग है, सबकी battles अलग है, and then we all are moving towards the goal of being successful and happy. Yeah. So yeah, that's it. I am done with my makeup. Let's get on with the outfit of the day, the big day, the birthday. So y'all, this is my outfit for today. This is pretty, and इसके साथ I'm going to pair this cute socks with chunky loafers, and let me tell you, she's pretty. Look how pretty she is. My brother got this from H&M as a pre-birthday gift. I love her. Try to take one ride around in my body. Can't say I saw you around when I started. I'm a hometown hero, that's a far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, this time it's my city. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, 'cause I know you miss me. Well, I'm busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Now your best friend is a fan of me, and your fam acting like we family. Heard your gram, girl, she heard of me. And your man know I'm the man to be. Now your best friend is a fan of me, and your fam acting like we family. Heard your gram, girl, she heard of me. And your man know I'm the man to be. Try to take one ride around in my body.